So, in today's lecture, we are going to cover the following topics. Classification of signal we will see, then in which we will cover deterministic and non-deterministic signal, then periodic and non-periodic signals with example, then we will solve some numerical problems. Now let's see the further classification of continuous and discrete time signal. So it is further classified as deterministic and non-deterministic signal, then periodic and non-periodic signal, then symmetrical and unsymmetrical signal, then energy and power signal. These all signals are very important. Now what is deterministic and non-deterministic signal? Deterministic signal, a signal which has a regular pattern and can completely represented by mathematical equation at any time is called deterministic signal. मतलब deterministic signals are those signal which can be completely specified in time. तो इसका जो नेचर और एम्पलीट्यूड जो होता है इस सिग्नल का at any instant of time can be predicted. तो एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि साइन वेव, एक्सपोनेंशियल वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव. तो ये सब के जो नेचर और एम्पलीट्यूड हम लोग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग डिटरमाइन और प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट non-deterministic signals are those signal which has uncertainty about its occurrence is called random signal भी बोलते हैं हम लोग इसको. A random signal cannot be represented by mathematical equation. तो random signal को हम लोग mathematical equation से हम लोग represent नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या है, ये सिग्नल जो है deterministic signal मतलब हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम लोग इसके वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या है, एक रैंडम सिग्नल है जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते. अगर हम लोग किसी सिग्नल को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं तो हम मैथमेटिकली कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नॉइस, जो कि हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं. एम्पलीट्यूड और तो ये जो सिग्नल है तो इसका हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे निकलेंगे. सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू बिकॉज इट इज़ अ रैंडम सिग्नल सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डिटरमाइन द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स. सो दिस आर नथिंग बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. now second one is periodic and non-periodic signal. So periodic signal is what? The signal which repeat itself at a fixed time period is called periodic signal. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, so it is represented as x of t equals to x of t plus t naught. मतलब हमारा जो सिग्नल टाइम पीरियड है t naught के बाद वो सिग्नल फिर से रिपीट होगा. तो उस टाइप के सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियडिक सिग्नल. सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो n नंबर ऑफ पीरियड के बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होगा, रिपीट होगा. सो इसका एग्जांपल क्या है, दिस इज नथिंग बट अ साइन वेव. इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीरियडिक सिग्नल. सिमिलरली non-periodic signal are those signal which not repeat after a fixed interval of fixed period of time. That is x of t is not equals to x of t plus t naught for continuous time signal, and x of n is not equals to x n plus n for discrete time signal. मतलब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल टी नॉट के बाद, टी नॉट जो है आपका, टी नॉट क्या है, पीरियड है, टाइम पीरियड है. तो इस टाइम पीरियड के बाद इस सिग्नल रिपीट नहीं होता है. बट
सिमिलरली एन पीरियड के बाद ये सिग्नल रिपीट नहीं होता है फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. So we can see the example, that is, it is nothing but a exponential signal. This is nothing but a exponential signal, e to the power minus alpha t, exponentially decaying signal. So we have already covered this signal in the previous lecture. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है टी नॉट क्या है यहाँ पे, टी नॉट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. टी नॉट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब इस टाइम पीरियड टी नॉट के बाद ये सिग्नल रिपीट नहीं हो रहा है. बट इन द केस ऑफ दिस टाइम पीरियड इज टी नॉट and after this time period again signal is repeating itself. So here it will be 2 t naught. So t naught is nothing but it is equals to 1 by frequency f naught. Now let's prove that the sine wave x of t equals to a sine omega t is a periodic signal. So here x of t is given is a sine omega naught t. This is nothing but omega naught t, but I have taken a w, don't get confused. So for periodic signal we know that x of t is equals to how much? Periodic signal condition is x of t equals to x t plus t naught t naught. Now x of t is given already this, so we can write x of t plus t naught is equals to a sine omega naught into t plus t naught, because we just putting this value over here in place of t. So further we can write it as a sine omega naught t plus omega naught t naught, bracket close. We can write it like this, but we know that omega naught is equals to how much? It is equals to 2 pi f naught, where omega naught क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमें पता है क्या होता है, 2 pi f naught होता है. एंड t naught is equals to how much? It is equals to 1 by f naught होता है. So we can write this omega naught t, in place of omega naught t we can write how much? We can write 2
pi f naught into 1 by f naught. So it will get cancelled. So we will get how much? 2 pi. So now this will become, this equation will become how much? That implies x of t plus t naught will be equals to a sine omega naught t plus 2 pi. We will get this. So after implementing sine, we know the formula of sine a plus b. So just implementing this formula over here, sine a plus b, then we will get how much? We will get a sine omega naught t, which is equals to x of t. So hence proved that the given sine wave is a periodic signal. Similarly, for exponential signal also, we can suppose this is a signal x of t is equals to this alpha of t. It is given x of t equals to this, and you have to find that signal is periodic or non-periodic signal. So just we have to replace this with, first we have to find x of t plus t naught. So just we will replace e to the power minus of alpha of t plus t naught. We will write like this, and we know that for exponential signal t naught is nothing but it is infinite. So after solving this, we will get how much? We will get e to the power minus, we will not get equals to e to the power minus alpha of t. That implies it is x of t plus t naught is not equals to x of t. So hence the signal is non-periodic signal. Now some of the important points to remember. The sum of the two continuous time signal x1 of t and x2 of t with period t1 and t2 is periodic if the ratio of their respective periods t1 by t2 is a rational number or ratio of the two integer, otherwise not periodic. ये हमें हमेशा ध्यान रखना है. Next point is the fundamental period is the least common multiple, that is LCM of T1 and T2. ये हमें याद रखना है. And the sum of the two discrete time periodic sequence is always periodic. So ये सब पॉइंट्स को हम लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं. So example is determine whether the following signals are periodic or not. If periodic, find the fundamental period. So number A is sine 12 pi t.
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज अ साइन वेव सो इट इज अ साइनोसॉइडल सिग्नल एंड हेंस इट इज अ पीरियडिक सिग्नल. नाउ हाउ टू डिटरमाइन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस सिग्नल. तो यहाँ पे ओमेगा क्या है हम लोग का, हमारा यहाँ पे ओमेगा क्या है, 12 पाई है. तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 12 पाई इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड्स. तो यहाँ पे क्या है, हेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 12 पाई दिया हुआ है ओमेगा का वैल्यू. तो फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल्स टू 12 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो टाइम पीरियड क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज नथिंग बट इट इज अ 1/f. तो हम लोग का ये जो वैल्यू है इसका ऑपोजिट ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सेम चीज है. सो हियर वी गेट 2 पाई बाई 12 पाई. So we get the result this. Now let's see another example, e to the power j 4 pi t. So we have to find this signal is periodic or non-periodic, then we have to find the fundamental period, time period. Since it is a complex exponential, so the signal is periodic signal. Now here omega is equals to 2 pi, then the fundamental period will be equals to 2 pi by omega, which will be equals to 2 pi by 4 pi equals to 1/2 seconds. So we can see from here also the signal is periodic because it is a ratio of the integers. Now next example is sine of 10 pi t plus cos of 20 pi t. Now here omega 1 is value is 10 pi and omega 2 value is 20 pi. Now we will determine t1 by t2. Now t1 by t2 is equals to how much? It will be equals to 1/5 and 1/10. Just we have to solve this. We have to find 2 pi f, f1 equals to 10 pi, then we will get f1, and if f1 will get, then we can easily get the value of t1. T1 is nothing but it is equals to 1/f1. Then we will get 1/5. Similarly here we have get 1/10 which is equals to 2. So t1 by t2 is a rational number, hence the signal is periodic signal. Now the fundamental period t of the function is the LCM. Now t1 and t2, the LCM of the t1 and t2 is 2. So hope you have understand.